Welcome again. Myself MD Tariq Anwar. I am working as an assistant professor in Mechanical Engineering Department at St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurugram. Today I am going to deliver a lecture on the topic that is Introduction of Stress Strain Diagram and Young's Modulus and Hooke's Law related to this diagram. This is the subject, that is materials engineering, which comes under 4th semester of mechanical engineering department. So today I am going to deliver a lecture on this topic. So first of all we will discuss what is the stress strain diagram. Clear? It is a tool for understanding material behavior under load. It means that when you apply a load on a material, it will change its shape. So material changing behavior under load, and due to this there will be a stress strain diagram will develop. So it is a tool to analyze the behavior of material under load. So a stress strain diagram help engineers to select the right materials for a specific loading conditions. Clear? क्या करता है ये? Stress strain diagram will show that is the material is behaving, which type of material it is ductile material or it is brittle material, and स्पेसिफिक लोडिंग कंडीशन पे क्या डिफरेंट बिहेवियर चेंज होगा मटेरियल्स के अंदर. दिस इज़ नोन एज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड देयर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रेस एंड देयर विल बी ए स्ट्रेन, और यू कैन से elongation in the material, or we can say it is a graph that represents how a part behaves under an increasing load. For example, आपने 10 किलो न्यूटन अप्लाई किया लोड ऑन ए प्रिज्मेटिक बार. उसके बाद ग्रेजुअली वी आर इंक्रीजिंग द लोड. क्लियर? 10 to 15, 15 to 20. सो किस तरह ये बिहेव कर रहा है मटेरियल. Clear? So it is a graph that represents how a part behaves under an increasing load and used by engineers when selecting material for a specific design. जिस डिज़ाइन के लिए हमको मटेरियल सेलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं. किससे? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से. कितना लोड पे कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ, कितना स्ट्रेन आया. सो यू कैन से कि हम जब लोड अप्लाई कर रहे हैं तो मटेरियल में क्या चेंजेस हो रहे हैं. दिस इज नोन एज स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप. नाउ व्हाट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम? दैट इज a stress strain diagram generally contains 3 regions. Stress strain diagram I'll show in the next slide. Read statements here. I'll explain one by one. That is, there are 3 regions existing in stress strain diagram. Here I have mentioned another, but I'll explaining. That is, first one is elastic region, second one is plastic region, and third one is elastoplastic region. Clear? But in this slide I have mentioned another name, so no need to worry. This is the correct concept. First one is elastic region. That is, this portion is generally represented as a linear relationship between stress and strain. Linear relationship. जितना स्ट्रेस होगा उतना स्ट्रेन होगा. If the load is released, the specimen will return to its original dimensions. For example, 20 mm का डायमीटर का हमने प्रिज्मेटिक बार लिया, और यू कैन से सिलेंड्रिकल बार लिया, उस पर लोड अप्लाई किया मैंने. सो अप टू इलास्टिक रीजन देयर विल बी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. जितना स्ट्रेस इंक्रीज करेगा उतना स्ट्रेन इंक्रीज करेगा. स्ट्रेस विल बी ऑन वाई एक्सिस, स्ट्रेन विल बी ऑन एन एक्स एक्सिस. ऑन
x axis, sorry. So it will be a line or proportional line or linear relationship between them. Second one is plastic region. In this portion the specimen begins to yield. What do you mean by yield? Yield means there will be production of, or you can say yield means produce hona. Yield means produce hona. So you can say material will show some plastic behavior, or you can say material will elongate it permanently. So yielding will start in plastic region. The maximum strength of the specimen occurs in this zone. The specimen endures some permanent deformation. Already explained. There will be some permanent deformation that remains after the load is released. In first case, after removing the load or releasing the load, materials will return back to its original position, but in plastic region it will not return back. Correct? Are you able to understand? That is, in elastic region there will be there is a complete chance to return back to its original position or it regain its original shape. But in case of plastic region there will be a permanent deformation. How the deformation may be, how small the deformation may be, थोड़ा सा भी अगर होगा तो होगा, means that permanent deformation will exist in plastic region. And third one is, here he has mentioned rupture, but I am telling you that is elastoplastic region. There will be some elastic property and some plastic property. This is the graph, actual graph, or you can say rupture point. After that there will be a rupture point. This, so he has mentioned last point here, that is the point at which the specimen or a specimen breaks into two parts. मैंने क्या लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था. I have given you an example, that is cylindrical bar of prismatic shape. I am applying a load on it. So after application of load or increasing the load, it will break at some point. This is known as rupture point or fracture points or breaking points. Clear? So this is the stress strain curve. I will start from bottom. See this diagram. Here stress on y-axis and strain on x-axis. Strain is nothing but elongation, or you can say deflection. Here he has taken in inches, you can take in mm. And on x-axis there will be a stress, or you can say load. So P upon delta, this is a stress strain diagram, or stress upon strain, it is also a stress strain diagram. So first one, that is elastic region, already explained here in the previous slide. So this is the elastic limit. Up to elastic limit there will be a linear relationship between stress and strain, and after that there will be a plastic region, means that there will be a permanent deformation in the material, and after that there will be a rupture point. So it is clear now. This is the stress strain diagram or basic stress strain diagram. What is a stress strain diagram? Again I am explaining the next slide. The stress strain diagram are generated experimentally through the performance of controlled tensile tests using fabricated test specimen. Already explained in mechanical properties in the last video lecture series. So here I am explaining again and again. Stress strain diagram are generated. कहाँ से generate करते हैं? With the help of universal testing machine. Experimentally, experiment करते हैं through the performance of controlled tensile test. Controlled tensile test करते हैं, specimen लेते हैं, उसको fix करते हैं universal testing machine में. There will be a two jaw in universal testing machine. One is moving and one is fixed. So due to this there will be a elongation, or after increasing the load there will be an elongation, and finally it will break. So this is experimentally we are getting the stress strain diagram for a particular specimen
or tensile test. This is the specimen on the right side of the diagram. Due to load, there will be change in the diameter of the specimen, and after some point, see this diagram on the right hand side, very right hand side, that is, it will break after reaching breaking point or rupture point. Clear? So the applied load and displacement are monitored during the test. हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कितना हमने लोड अप्लाई किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड आर यूज टू कैलकुलेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रेस्पेक्टिवली. नाउ इट इज़ क्लियर. क्या करते हैं, स्पेसिमेन लेते हैं, उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में फिक्स करते हैं, लोड को इंक्रीज़ करते हैं. आफ्टर दैट क्या होगा, देयर विल बी ए चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिमेन after some point, or you can say after reaching maximum point, ultimate tensile strength, it will break. So this will give you a stress and strain relationship. Clear? Now this I am showing here universal testing machine. See the figure here, upper jaw is fixed and lower jaw is moving in upward and downward direction. So in the middle of this universal testing machine, you can fix tensile specimen, and by moving this jaw or cross head, we apply a load on it. Clear? Already explained. So after some point क्या होगा, कुछ देर के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा, ये मटेरियल फेल हो जाएगा. सो जब तक ये फेल हुआ तब तक का रीडिंग ऑन दिस कंप्यूटर. सी देयर इज़ अ मॉनिटर, देयर इज़ अ CPU. क्लियर? देयर इज़ a different types of button to apply the load on this machine, that is the universal testing machine. This machine is also used for compression testing. Here below the crosshead, or you can say lower part, there is a part in which you can fix or you can place a specimen, and by application of load you can compress the specimen, or compression test can be performed by using UTM. Clear? So this is a universal testing machine setup. Now this is the diagram again I am showing. Similar is the case. Here I have installed a graphical method in the right side of the machine, that is graph will produce during the testing. So you can obtain directly graph with the help of universal testing machine. किस टाइप का ग्राफ प्रोड्यूस होगा जब हम टेंसाइल स्पेसिमेन को टेस्ट कर रहे हैं. क्लियर? सो you can directly take the graph from this testing machine, that is universal testing machine. Now we will discuss some other part of a stress strain diagram, that is a stress strain diagram differs in form for various materials. Means that different types का material, different types का stress strain diagram होगा. It is clear? For example, you have taken ductile material, क्या होगा, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिफरेंट होगा. ब्रिटल मटेरियल के केस में उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिफरेंट होगा. सो he is telling the stress strain diagram differs in form for various materials. Second point is engineering materials are classified as either ductile or brittle material. Generally जो क्लासिफिकेशन होता है या तो मटेरियल डक्टाइल होगा या तो मटेरियल ब्रिटल होगा. इधर इट विल बी डक्टाइल और इधर इट विल बी डक्टाइल और ब्रिटल. सो व्हाट इज डक्टाइल मटेरियल एंड व्हाट इज ब्रिटल मटेरियल? See that a ductile material is one having relatively large tensile strain up to the point of rupture, like structural steel and aluminum or aluminum. Clear? So in this case there will be a large tensile strain will exist in case of steel or in case of aluminum.
So this is known as ductile material. Whereas brittle materials has a relatively small strain up to the point of rupture, like cast iron or concrete. कंक्रीट जो हम यूज़ करते हैं घर में, कास्ट आयरन फॉर एग्जांपल, यू हैव सीन फाइल, रेती, यू हैव हर्ड अबाउट रेती और फाइल्स. सो क्या है, कास्ट आयरन का बना होता है. सो वेयर एज ब्रिटल मटेरियल्स हैज़ रिलेटिवली स्मॉल स्ट्रेन अप टू द पॉइंट ऑफ रप्चर, मीन्स स्ट्रेन इसमें कम होगा, ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा. डक्टाइल मटेरियल्स क्या होगा, स्ट्रेन क्या होगा उसमें बिफोर रप्चर ज़्यादा होगा. सो मेन डिफरेंस बिटवीन डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर टेंसाइल लोड. क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर टेंसाइल लोड. That means high percentage elongation and high percentage reduction of area indicate ductility. जब ज़्यादा elongate हो रहा और ज़्यादा reduce हो रहा उसका एरिया, it means it is ductile material. Brittleness is known as materials failure with little deformation. थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ, फेल हो गया. So we can say low percentage elongation, very less elongation, and low percentage reduction of area indicate brittleness. Now we will discuss fracture, that is fundamentals of fracture. Simple fracture is the separation of a body. क्या है फ्रैक्चर, क्या है, एक पार्ट को दो पार्ट में कर दिया, ये क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया. सिंपल फ्रैक्चर इज द सेपरेशन ऑफ ए बॉडी इनटू 2 or more pieces in response to an improved or imposed stress that is static, that is constant or slowly changing with time. यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम क्या करते हैं, मटेरियल फेल होता है हमारा, कैसे फेल होता है, लोड को हम ग्रेजुअली और स्लोली इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो स्ट्रेस उसमें इम्पोज होते जाता है. आफ्टर रीचिंग पर्टिकुलर पॉइंट इट विल फेल. सो दिस इज़ नोन एज फ्रैक्चर. क्या हो गया, एक पार्ट जो है दो पार्ट में, दो पीस में हो गया और दो पार्ट में हो गया. दिस इज नोन एज फ्रैक्चर. फ्रैक्चर्स कैन ऑल्सो अकर फ्रॉम फैटिग. फर्स्ट केस में क्या था, स्टैटिक लोड और स्लोली चेंजिंग विद टाइम लोड था, बट इस केस में हम क्या करें, फैटिग लोड. व्हाट इज फैटिग लोड, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट यूनिट, सो वेट फॉर दैट. व्हाट इज फैटिग, फैटिग इज नथिंग बट साइक्लिक लोड. सो when cyclic stresses are imposed and creep. What is creep, time dependent deformation normally at elevated temperature. क्या होता है क्रीप, डिफॉर्मेशन होगा टाइम डिपेंडेंट, 1 year 2 years 5 years के लिए क्या हो गया, मटेरियल्स कहीं फिक्स्ड है, ठीक है. स्ट्रक्चरल बिल्डिंग यू हैव सीन, क्या होगा उसमें क्रीप हो जाता है. टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन इज नोन एज एट एलिवेटेड टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जल्दी क्रीप होगा, टेम्परेचर कम होगा तो क्रीप में ज़्यादा टाइम लगेगा. सो फ्रैक्चर can also occur from fatigue when cyclic stresses are imposed and creep, time dependent deformation normally at elevated temperature. Although applied stresses may be tensile, compressive, shear और torsional. किसी तरह का भी स्ट्रेस हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस और टॉर्जनल स्ट्रेस, और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. इन तीनों का, चारों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. अगर एक डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनी एक्सियल स्ट्रेस. दो डायरेक्शन में लग रहा है एक्स एंड वाई तो क्या है, बाई एक्सियल. 3 डायरेक्शंस में लग रहा है इट मीन्स दैट ट्राई एक्सियल. क्लियर. तो प्रेजेंट डिस्कशन विल बी कन्फाइंड टू फ्रैक्चर दैट रिजल्ट फ्रॉम यूनी एक्सियल टेंसाइल लोड. क्लियर. सो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यूनी एक्सियल टेंसाइल लोड के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं. फॉर मेटल्स 2 fracture modes are possible, already explained, that is ductile and brittle. Classification is based on the ability of a material to experience plastic deformation. Ductile metals typically exhibit substantial plastic deformation with high energy absorption before fracture. It means that ductile metals क्या करेगा, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को
शो करेगा, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा उसमें, विथ हाई एनर्जी एब्जॉर्प्शन बिफोर फ्रैक्चर. ऑन द अदर हैंड देयर इज नॉर्मली लिटिल और नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विथ लो एनर्जी एब्जॉर्प्शन अकम्पनीइंग ए ब्रिटल फ्रैक्चर. ब्रिटल फ्रैक्चर में क्या होगा, बहुत थोड़ा और नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा और वेरी लेस एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा. The tensile stress strain behavior of both fracture types may be reviewed in figure 6.13. I'll show this figure in the next slide. So here, see the diagram. I have drawn three diagrams here. First one is tensile load is acting on the specimen, or tensile load is acting on a prismatic bar. Second one is compressive stress or compressive load is acting. Third one is shear load is acting. So इट इज़ क्लियर. टेंसाइल किस टाइप का होगा, कंप्रेसिव में क्या होगा, पुश टाइप का होगा, टेंसाइल में पुल टाइप का होगा, स्ट्रेस शेयर में क्या होगा, पैरेलल टू द फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज फिगर 6.3 विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. दैट इज schematic representation of tensile stress strain behavior for brittle and ductile metals loaded to fracture. So I'll start from bottom. See this diagram. That is strain on the x-axis, stress on y-axis. So in this diagram, A, B, C, see that, which is blue in color. It is A, B, C. That is showing brittle fracture. यहाँ तक metal strain होगा, metal will fail. This is known as brittle fracture. See another part that is slightly orange in color, or you can say outline is red in color. A, B dash, C dash. This is showing ductile fracture. Ductile fracture में क्या होगा, strain will be more. Clear? क्लियर हो गया. ब्रिटल फ्रैक्चर क्या होगा, जल्दी फेल हो जाएगा. डक्टाइल में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दूर तक जाएगा. ग्राफ अंडर द ग्राफ दैट इज A, B dash, C dash will showing ductile fracture graph, and A, B, C is showing A, B, C is brittle fracture. So another part of a stress strain diagram, very very important point in case of a stress strain diagram, that is the different points and different important points on the stress strain diagram curve. I'll explain one by one with the help of diagram, but here I am explaining in the form of a statement. So see this, that is first one is proportional limit. It is also known as Hooke's law. From the origin O, imagine the graph. Clear? कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, जीरो से, जीरो टू एक्स एक्सिस, जीरो टू वाई एक्सिस. सो from the origin O, the point P called proportional limit. The stress strain curve is a straight line. In proportional limit में क्या होगा, stress strain curve will be a straight line. Now focus second point. Force or load is applied axially, no bending. अब लोड अप्लाई हो रहा है वो क्या, एक्सियली कर, यूनिएक्सियल लोडिंग इज अप्लाइड ऑन द स्पेसिमेन. नाउ third bullet point, that is this linear relation between elongation and the axial force causing was first noticed by Sir Robert Hooke in 1678 and it is called Hooke's law. Clear? Hooke's law कौन सा आया, Hooke was साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक्स, किसने इनको डिस्कवर किया, दैट इज दिस इज नोन एज हुक्स लॉ. name given as per the scientist, which given the concept of proportional relationship between stress and strain diagram up to proportional limit or linear relationship. This linear relation between elongation and axial force causing was first noticed by Sir Robert Hooke in 1678 and is called Hooke's law. It states that within the proportional line or limit, the stress is directly proportional to strain.
correct? Stress is directly proportional to strain. The constant of proportionally, you can write sigma is used for showing stress and E or epsilon is showing strain. So sigma is directly proportional to epsilon. So when we removing a proportionality sign, there will be a constant of proportionality, that is known as E. So the constant of proportionality is called the modulus of elasticity, E, or Young's modulus, and is equal to the slope of the stress strain diagram from O to P. Then we can write sigma is equal to E into epsilon, or E into strain. This is the actual diagram. I am starting from bottom. This is 0. See, on the left hand side, 0 point or origin point, strain on the x-axis and stress on y-axis. So see this diagram. This is figure stress strain diagram of a medium carbon structure steel. ये स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है. सो P इज़ रिप्रेजेंटिंग प्रोपोर्शनल लिमिट, ऑलरेडी एक्सप्लेंड. E इज़ द इलास्टिक लिमिट. दोनों जो होता है एकदम एक दूसरे के नज़दीक होता है. ये हेयर आई हैव गिवन enlarged व्यू, that is proportional limit or elastic limit. Third point is Y, that is yield point. Yield point from where yielding start, or you can say permanent deformation will occur at this point or from this point. R is the rupture strength, or see this is rupture strength, last point. And here U is the ultimate strength, कहाँ तक मटेरियल endure करेगा. दिस इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. एंड एक्चुअल रप्चर स्ट्रेंथ, ग्राफ जो है विल शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. दिस इज नोन एज एक्चुअल रप्चर स्ट्रेंथ. सो आई विल फिनिश माई टॉपिक with some definitions, that is, what is modulus of elasticity? To describe elastic properties of linear objects like wires, rods, which are stretched or compressed. A convenient parameter is the ratio of stress to the strain, called the Young's modulus or modulus of elasticity of the material. This is known as Young's modulus or modulus of elasticity. वायर वगैरह, रॉड वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, क्या होगा, जहाँ तक अगर वो प्लास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. नेक्स्ट इज यंग्स मॉडुलस कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द इलोंगेशन और compression of an object as long as the stress is less than the yield strength of the material. यंग्स मॉडुलस को कहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं? टू प्रिडिक्ट द इलोंगेशन और compression of an object as long as the stress is less than the yield strength. स्ट्रेस जब yield strength से कम होगा तो हम यंग मॉडुलस को यूज़ कर सकते हैं. In many materials, the relation between applied stress and the resulting strain is directly proportional up to a certain limit. कुछ फिक्स्ड पॉइंट रहेगा बहुत सारे मटेरियल्स में. Applied stress and resulting strain is directly proportional, and a graph representing those two quantities is a straight line. Up to proportional limit graph will be a straight line. The slope of this line is known as Young's modulus or the modulus of elasticity. I'll give you some data in tabular form, that is for Young's modulus or modulus of elasticity. That is the value of E. E is nothing but Young's modulus. So modulus of elasticity. Here I have mentioned serial number, materials, and E in gigapascal. Gigapascal means 10⁹ Newton per meter square. Pascal is Newton per meter square. G is 10⁹. सो स्टील के केस में क्या होगा, 200 to 220 गीगापास्कल जो होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा. क्लियर. सिमिलरली कास्ट आयरन के लिए 100 to 160, कॉपर के लिए 90 to 110. क्लियर. एंड ब्रास के लिए 80 to 90, एलुमिनियम के लिए 60 to 80, टिम्बर के लिए 10. So you can see that from this tabular form, that is the modulus of elasticity in case of steel is higher. You can say
that is, steel is very ductile material because it possesses high modulus of elasticity. So today I am finishing my topic of a stress strain diagram introduction. I'll cover next part, remaining part of this stress strain diagram in the next video lecture series. So thank you guys.